Morning student, how are you all? Hope you all are good. So student, today we are going to learn practice set for 4.1 page number 22, question number 5. Okay, question number 5 is draw a right angle triangle XYZ, draw its median and show their points of concurrence by G. Okay, so first we will draw here right angle triangle. Right angle triangle means 90 degree angle. Okay, 90-degree angle we have to draw. Okay, now we will take our rounder, and first we will draw a median. Okay, so we will put our rounder here and open this rounder more than half. y z का हमको मिड पॉइंट चाहिए, तो we will put our rounder like this, and more than half we will open our rounder. Now we will draw arc here. Okay, like this and like this. Okay, now we will put our rounder here and we will draw a arc like this. Okay, and like this. Okay, now we will draw a line. Clear? So this is the midpoint. Now we will draw a line like this, and this point is P. Okay, now we will put our rounder here and we will open our rounder more than half, and we will draw a line arc here and here. Okay, and we will put our rounder here and draw a arc here and here. Clear? Now we will draw a line like this. Okay, so this one is the midpoint. Okay, now we will draw a line. So this point is Q. So this is the midpoint. XP is the midpoint, median, and YQ is the median. So now we will put our rounder here and open it more than half. Okay, and we will draw arc here and here. Okay, now we will put our rounder here and draw a arc here. Now we will draw a line, okay, like this. Okay, now we will draw a line like this. Okay, so this point is called where all medians are made, P, Q, and this point is called R. So this point is called concurrence point. Okay, so we will write here concurrence. Okay, concurrence point. Now we will do our next question. Sixth question
sixth question is draw a isosceles triangle, draw all of its median and altitudes, write your observation about their points of concurrence. Okay, now here we have to draw an isosceles triangle. Isosceles triangle means isosceles triangle means isosceles triangle means isosceles triangle is where two sides are equal and one side different. Okay, so here we will draw a line first. Okay, 6 सेंटीमीटर की मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ. ओके, 6 सेंटीमीटर, इससे हमको 6 सेंटीमीटर लेना है. 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे एंड we will take our rounder like this and हम इसको राउंडर को इस टाइप से रखेंगे. ओके, एंड हमको 8 सेंटीमीटर हम यहाँ से लेंगे 1 से 8 तक. ओके, and we will put our rounder here and we will draw our here and now then we will put our rounder here and we will draw our here. Okay, and we will draw a line like this. So ये कितने सेंटीमीटर का हो गया? ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर. Okay, and this one is 6 centimeter. So isosceles triangle is where two sides are equal and one is different. Okay, so this one is 8 centimeter and this one is 6 centimeter. Now what they ask, draw a isosceles triangle, draw all of its median and altitudes. We have to draw all medians and we have to draw all altitudes. Okay, so first we will draw medians and next we will draw altitudes. Okay, so first we will, पहले तो हम अपना स्केल रखेंगे. ओके, वी विल पुट अवर स्केल लाइक दिस एंड ये 8 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे लेंगे 4 सेंटीमीटर. ओके, 4 सेंटीमीटर हम यहाँ लेंगे. ओके, एंड वैसे ही हम यहाँ पर स्केल रख के 4 सेंटीमीटर लेंगे. क्लियर? ओके, 4 सेंटीमीटर हमने लिया इसको. नाउ वी विल ड्रॉ लाइन लाइक दिस, सॉरी, like this and like this. Okay, and like this. Okay, so ये क्या हो जाएगा हमारा? ये मीडियन है. ओके, सो वी विल, इसको मैंने नाम दिया A, B और C and R and this one is P and Q. Okay, P, Q, R. Okay, so this is the median. Okay, so हमारा ये आ गया, ये हमारा मीडियन आया है, ये मीडियन है. ओके, ओके, नाउ we will draw our altitudes. Okay, altitudes हम कैसे निकालेंगे? Altitudes भी हम इस टाइप से ही निकालेंगे. We will put our scale like this and draw line like this and draw line like this. Okay, so where this point is meet एंड हम इसको एल्टीट्यूड्स को हम डिनोट करते हैं 0 से एंड मीडियन को हम डिनोट करते हैं जी से, ओ सॉरी, 0 ओ से एंड मीडियन को हम डिनोट करते हैं जी से. ओके, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड, सॉरी, ये हमारा क्या आया? एल्टीट्यूड्स आया.
एल्टीट्यूड हमारा। ओके, सो एस टी। ओके, सो एस सी is the altitude of AB, and TB is the altitude of AC, and AP is the altitude of BC. Now, okay, so ये क्या आया, हमारा altitude आया। So we will इसको बोलेंगे हम ऑर्थो सेंटर। ओके, फिर we will write the centroid। सेंट्रॉइड जी, द सेंट्रॉइड, ये क्या है, सेंट्रॉइड है हमारा। सेंट्रॉइड जी एंड ऑर्थो ऑर्थो सेंटर ओ। ओके, lies on perpendicular bisector of segment BC। Clear? Now, seventh question is fill in the blanks. We have to write. We have to fill these blanks. And point G is the centroid of angle ABC. So here is given figure ABC, triangle ABC, and we have to find this, fill in the blanks। okay, तो इसको हम फर्स्ट में करती हूँ, द सेंट्रोइड। सो पहले तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7। okay, so here is the statement। first, the सेंट्रॉइड जो होता है हमारा, devices each median in the रेशो क्या होता है, 2:1। तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। ओके, हमेशा 2:1 में ही होता है। सो एज यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ है। सो एक फिगर दिया हुआ है ABC, ट्राइंगल ABC। ओके, एंड this is the median ARCQB and AP। okay, so now first question है, so here is the statement, the centroid device each median is the ratio 2:1। so first we will understand जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक जो होता है ये 2 होता है। ओके, एंड सेंट्रॉइड से बेस तक होता है ये 1 होता है। ओके, एंड वी फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है if RG equal to 2.5 then GC equal to क्या होगा। ओके, सो RG we have given RG is 2.5। okay, 2.5, so we have to find here GC। okay, clear? and ये जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक है ये 2 है, सेंट्रॉइड से बेस तक है वो 1 है। सो ऐसे ही यहाँ होगा, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक 2 होगा, एंड सेंट्रॉइड से
बेस तक 1 होगा. ओके, नाउ वी विल GC is given, GC is not given, and RG. Okay, so first we will write here 2 by 1. 2 by 1 के फॉर्म में रेशियो होता है. ओके, ऑलवेज. सो GC is not given. Okay, so we will write GC like this, and RG is 2.5. Okay, 2 by 1. Now GC we will write like this, and 2 into 2.5 वहाँ आएगा तो 2.5 ऐसा होगा. सो 2.2 मल्टीप्लाई 2.5 हम करेंगे, सो वी गेट 5. ओके, वी गेट 5. सो GC इक्वल टू आ गया हमारा 5. ओके, नाउ your homework is second and third is your homework. You have to do the second and third. Okay, thank you so much.